हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दादा'S फिजिक्स। सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं काइनेमेटिक्स। जो भी हम वीडियो किए थे ऑन दोज बेसिस हम मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स करेंगे, और ये जो मैथमेटिकल जो प्रॉब्लम्स है रिलेटेड टू काइनेमेटिक्स, इनको हम कुछ ग्रुप में डिवाइड कर लिए हैं। यहाँ पे जो फर्स्ट ग्रुप है वो है फाइंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन फॉर द पार्टिकल्स। हम पहले सीखेंगे। लास्ट जो वीडियो मैंने अपलोड किया था उस वीडियो में मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था एक प्रॉब्लम के बारे में। वहाँ पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एक्सेलरेशन एंड उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मैंने किया था। उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहेगा, प्लीज़ गो एंड चेक। एंड इन दिस वीडियो हम थोड़ा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स और थोड़े डिटेल्स में समझेंगे, एंड आई थिंक इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्या है? वो है फाइंड वेलोसिटी at 2 means यहाँ पे t is equal to 2 second. Okay, if displacement is 2t square plus t plus 2, and a means acceleration, and it is asked to find that displacement at 2 second and acceleration at 2 second. So you know that if you want to find instantaneous velocity, then you have to differentiate the displacement with respect to time. So you need to find ds dt. You need to find ds dt. So from this equation, if we do ds dt, we differentiate this displacement with respect to time, then what we will get? We will get by differentiating 2t square, we will get 4t. By differentiating t, we get a 1. By differentiating 2, we get a 0. So actually velocity is equal to 4t plus 1. Okay, this is the instantaneous velocity expression in terms of time. That means here the velocity is changing with time, which signifies that the particle has an acceleration, because you know that the definition of acceleration is if the particle changes its velocity in direction or in magnitude, then it must have an acceleration. And in this case it is very obvious or very easy to understand that here velocity is a function of time. So if we change t in this equation, that is v is equal to 4t plus 1, then we'll get a change in velocity with time, then we'll get the acceleration. Okay, so this is the expression of instantaneous velocity. Now we need to find instantaneous velocity at 2 seconds. Then just put 2 in place of t, then we'll get 9 meter per second is the instantaneous velocity of the particle. Now the next question is the acceleration. Find acceleration. To find acceleration, we need to differentiate velocity. Okay, so we need dv dt. So dv dt, from dv dt, that means if we differentiate this velocity with respect to time, then by differentiating 4t we will get 4. By differentiating 1 we will get 0. That means here the dv dt, that means the acceleration is 4 meter per second square. Okay, so here acceleration is time independent. Acceleration is time independent. That means here the acceleration is uniform acceleration. Okay, uniform acceleration. Okay, it's very important to know that what is uniform acceleration. Uniform acceleration means the particle accelerate itself or accelerating along a definite direction, and the magnitude of acceleration remains constant with time. Okay, and that means during change of time there is no change in acceleration, magnitude of acceleration or direction of acceleration. Okay, तो मतलब यहाँ पे जो acceleration है, acceleration का magnitude और acceleration का जो direction है, कुछ भी change नहीं होगा। यहाँ पे acceleration constant रहेगा. Okay, this is actually uniform acceleration. So the particle in this case is in uniform acceleration but in non-uniform velocity. Okay,
and the instantaneous velocity of the particle here is 9 meter per second. Okay, if we want to draw the graph of the corresponding particle velocity versus time graph, okay, so velocity versus time graph, if we consider this is velocity, this is time, just put t is equal to 0. If we put t is equal to 0, then we get an value of velocity that is 1 meter per second, and you know the velocity at t is equal to 0, but t is equal to 0 is the initial velocity. Okay, time जब 0 है, so उसका जो velocity है वो क्या है, वो actually initial velocity of the particle है. So यहाँ पे मान के चलो ये है 1 meter per second. If we consider the unit of the velocity is meter per second, so 1 is the initial velocity of the particle, and the velocity is linearly dependent on time. That's why we get a straight line like this. Okay, so this is velocity versus time expression and velocity versus time graph. Okay, so if we find the slope of the graph, then what we'll get, if we find the slope of the graph, then we'll get the acceleration. So remember, this is very important point. This is slope of velocity versus time graph is actually acceleration, and here the acceleration remains constant. That's why we get a straight line. If the acceleration is not constant, then we never get this kind of graph. Okay, and we'll see later on next problem. Okay, so this is another question. This question is kind of a simple idea of mathematics. Okay, so here the t is equal to root over x plus 2. Okay, so the basic twist in this question is that in the previous question we'll find displacement as a function of time, and here in this question it is given that time as a function of displacement. So the first thing we need to do that find the expression of displacement in terms of time. Okay, so if we need to find the expression of displacement in terms of time, then we will get t minus 2 root over x is equal to t minus 2. So we need to find x, so just square both sides, then we will get t square minus 4t plus 4. Very useful information. Now it is quite similar problem like previous problem. Okay, it is asked to find the instantaneous velocity at t is equal to 2 seconds. Okay, so we need to differentiate just this displacement dx dt. We need to find dx dt, and by differentiating t square we'll get 2t. By differentiating 4t we get a 4. So just put the value. If we put t is equal to 2 seconds, then what we will get? We will get velocity as a function of time. We will get 2t minus 4. So velocity at 2 seconds will get 0. Okay, so the particle is at rest at t is equal to 2 seconds. Okay, or you can say the velocity of the particle is 0 at t is equal to 2 seconds. Okay, it's very important. Okay, if it is asked to find the acceleration of the particle, then we need to differentiate this velocity again, and if we differentiate this velocity, okay, so we need to find that dv dt. By dv dt what we will get? We will get 2. By dv dt we will get 2. Okay, so this is the acceleration of the particle, and the velocity of the particle is 2t minus 4. Okay, so here it is a very important question, is that what is this minus 4? Okay, if we consider the particle is moving along this positive x-axis. Okay, particle is moving along this positive x-axis. That means initial velocity of the particle is minus 4. Here we'll find, if we put t is equal to 0, then what we will get? We will get the initial velocity of the particle, and the initial velocity of the particle is minus 4, which represent that the particle is not moving initially along positive x-axis. Okay, it is moving along negative x-axis. Okay, it is moving along negative x-axis. Negative x-axis initially. So u is 4
I cap with a negative sign. That means particle is moving along negative x-axis initially, then by forcing it with an acceleration 2 meters per second square, the particle is compelled to move along positive x-axis, and that's why particle reach a point where its velocity is 0, because initial velocity is along the initial momentum along negative x-axis. So if we apply a force against the momentum, then we'll get a point where the velocity becomes 0. Okay, velocity becomes 0. But the most important thing is that if we put t is equal to 3 seconds, if we put t is equal to 3 seconds, then what is the velocity? If we put t is equal to 3 seconds, then we get velocity at 3 is 2 meters per second. That means the particle comes at rest for a little bit of time, then it will move again. So if we represent this phenomena, with a graph, then what we will get? We need to understand this. Okay, this is velocity, this is time. Initial velocity is -4, so this is -4. Okay, now velocity is increasing and reach to that point where the velocity is 0, then again it is increasing. Okay, so this slope is positive, and this positive slope represent the acceleration of the particle. The graph of this motion is very important. Velocity versus time graph is very important. Okay, you need to understand. Okay, यहाँ पे क्या हुआ है, जो वेलोसिटी है एंड जो टाइम है उसमें बहुत ही अच्छा एक रिलेशन मिला है. वेलोसिटी इज इक्वल टू 2t-4 एंड विच रिप्रेजेंट दैट इनिशियली जो पार्टिकल है ना, उस पार्टिकल का एक वेलोसिटी था, वो है -4. एंड -4 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? -4 रिप्रेजेंट कर रहा है यही कि इनिशियली जो पार्टिकल है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस में मूव कर रहा था, एंड व्हेन वी अप्लाई फोर्स अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, देन the particle compels to move along positive x-axis. Okay, particle positive x-axis में move करना start करेगा. Okay, we apply acceleration. Okay, but as the initial movement of the particle along negative x-axis, that means it must reach to a point where its velocity gets 0. Okay, and this is the point where the velocity of the particle is 0, and which is t is equal to 2 seconds. After that, as it has an acceleration, so velocity again increase linearly increase कर रहा है. Okay, I think it's clear to all of you. If you have any doubt, then please comment करो, comment section में comment करो, I will solve this. Okay, एंड अगर तुम लोगों को समझ में आ रहा है तो लाइक देना मत भूलना. ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ये एक जेईई मेंस का PYQ था. ओके, सो xt इज इक्वल टू at प्लस vt स्क्वायर माइनस ct क्यूब. फाइंड वेलोसिटी व्हेन a इज इक्वल टू 0. व्हाट डज इट मीन? a इज इक्वल टू 0 मींस द टाइम व्हेन एक्सेलरेशन इज 0. So at first we need to find the velocity of the particle. The velocity as a function of time, if we differentiate the right hand side of the equation given, then what we will get? We will get a, we'll get a 2bt, and we'll get a 3ct square. Okay, we'll get this. And from this equation, if we want to find the time when acceleration is 0, then we need to find the expression of the acceleration. So to find acceleration expression, we need to differentiate this equation again, and as a is a constant, then by differentiating a we'll get a 0. From this we'll get a 2b, from this we'll get a 6ct, and according to the condition
this is equal to 0. We need to find the time when acceleration is equal to 0. So here t is equal to 2b divided by 6c. Okay, so t is equal to what? T is equal to b by 3c. So here t is equal to b by 3c. It's very important. Now put this value in this equation vt, because we need to know the velocity. Okay, so what is the velocity? If we put in place of t, then we will get v at b by 3c is equal to a plus 2b into b by 3c minus 3c into b square divided by 9c square. Okay, and from this we will get another 3c. From this we will get another 3c. That means a plus 2b square divided by 3c minus b square by 3c, and from this we will get a plus b square by 3c is the velocity at time b by 3c when acceleration is 0. Okay, acceleration जब 0 होगा then velocity ये होगा. Okay, I think it's clear. Okay, now coming to next question. ये थोड़ा हटके टाइप का क्वेश्चन है. यहाँ पे देखो, यहाँ पे पार्टिकल का जो पोजीशन वेक्टर है वो गिवन है, एंड इट इज आस्क्ड टू फाइंड दैट्स द वेलोसिटी एट t is equal to 1 and the velocity and the acceleration at t is equal to 2. A very common question. So what you need to do? We need to do the simple differentiation of the given equation. So कैसे करें डिफरेंशिएशन? वेक्टर है तो वेक्टर है, कोई बात नहीं, सिंपल डिफरेंशिएट करो. यहाँ पे dr dt को निकालो. dr dt को निकालोगे तो क्या आएगा? आएगा क्या? वेलोसिटी आएगा. वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ t आएगा. 15t स्क्वायर है, 15t स्क्वायर को डिफरेंशिएट करोगे, t स्क्वायर का डिफरेंशिएट बन जाएगा 2t, और यहाँ पे 15 है, 15 into 2 क्या होता है? 30 होता है. 30t I cap. Okay, now differentiate. If we differentiate 4, what we'll get? We'll get 0. Okay, minus 20t square. If we differentiate this, what we'll get? We'll get 40t j cap. Okay, j cap 30t I cap minus 40t j cap. बहुत ही अच्छा एक वैल्यू आया यहाँ पे. Now it is asked to find the velocity at t is equal to 1. So just put 1. Okay, so just put 1 in place of t. So यहाँ पे 1 पुट कर दिया तो क्या आएगा? 30 I cap minus 40 j cap. बहुत ही अच्छा वैल्यू आया है, और ऐसे ही अच्छा वैल्यू आता रहेगा. यहाँ पे एक्सेलरेशन निकालो. क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. दोनों ही कांस्टेंट है. नहीं, किसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा? vt को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, vt को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. क्या होगा? dv dt होगा. dv dt का आंसर क्या होता है? एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मिलेगा. अगर टाइम आया तो आया है, इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. क्या आएगा? 30 I कैप आएगा t का डिफरेंशिएट से, 40 आ गया j कैप. ओके, सो 30 I कैप माइनस 40 j कैप. बहुत ही अच्छा आंसर आया है. तो यहाँ पे एक्चुअली एक्सेलरेशन इज नॉट ए फंक्शन ऑफ टाइम अगेन. तो ये जो एक्सेलरेशन है क्या है? ये है कांस्टेंट एक्सेलरेशन. ये है कांस्टेंट एक्सेलरेशन. ओके, यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है. अलोंग एक्स एक्सिस एक्सेलरेशन क्या है? ये जो एक्सेलरेशन है ये एक्स एक्सिस में एक्सेलरेशन है. ये जो एक्सेलरेशन है ये वाई एक्सिस में एक्सेलरेशन है. मतलब ये जो पार्टिकल है ना, ये पार्टिकल एक्चुअली वन डायमेंशनल मोशन में नहीं है. ये पार्टिकल किस में है? ये पार्टिकल टू डायमेंशनल मोशन में है, बिकॉज इट हैज टू डिफरेंट डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, दैट इज ax and ay. ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. ये क्वेश्चन तुमको एक फॉर्मूला देगा. ओके, एक्सेलरेशन इक्वल टू dv dt दिया हुआ है, बहुत ही अच्छा. और इसमें से हम एक फॉर्मूला सीखेंगे और वहां पे ही हमारा काम हो जाएगा. a इज इक्वल टू dv dt दिया हुआ है, एंड क्या
क्वेश्चन पूछा गया है वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल है व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज s। क्या करना पड़ेगा इसमें, क्या करना पड़ेगा, देखो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv dt आ गया, बहुत ही अच्छा हुआ। अब क्या करेंगे, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू हम as we need to deal with displacement, so we write it in this way। क्या अप्लाई किया यहाँ पे, चेन रूल अप्लाई किया है, dvds into ds dt। ओके, so you know what is ds dt? ds dt you know because ds dt is the velocity, so acceleration ads that is equal to v dv। now integrate 0 to s, integrate it 0 not 0 initial velocity मान के चलो u, फाइनल वेलोसिटी v है। इसको अगर इंटीग्रेट करोगे तो a तो कांस्टेंट है, ds का इंटीग्रेशन होगा सिर्फ s आएगा, और इसको इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, v स्क्वायर आएगा, v स्क्वायर बाई 2 आएगा, और यहाँ पे v आएगा और u आएगा। तो अगर पुट करोगे तो आ जाएगा ये as is equal to v square minus u square by 2। that means we will get v square is equal to u square plus 2as। बहुत ही अच्छा एक फॉर्मूला आ गया, बहुत ही अच्छा एक फॉर्मूला आ गया। ये फॉर्मूला जो प्रूफ है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो बोर्ड एग्जाम का भी प्रिपरेशन कर रहे हो इस वीडियो से उन लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल एक फॉर्मूला है, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ओके, यू नीड टू नो इट। ओके, बहुत ही अच्छा एक फॉर्मूला है, इसको याद करके रखो, ऐसे ही प्रूफ कर देना, तुम्हारा काम हो जाएगा। और जो हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो उन लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल एक फॉर्मूला है। ओके, बहुत ही हेल्पफुल एक फॉर्मूला है। कैसे हेल्प करेगा, ओके, ये बहुत ही अच्छा हेल्प करेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कैसे हेल्प करेगा। ओके, अब एक प्रॉब्लम करेंगे, जिस प्रॉब्लम से हम ये सीखेंगे ये जो प्रोसेस है ना चेन रूल का, ये कितना हेल्पफुल है, जेईई मेंस में कितना काम आएगा। देखो प्रोसेस जानना चाहिए, इसीलिए मैंने करवाया है यहाँ पे। तो प्रोसेस जान लेते हैं। ये देखो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, यहाँ पे तो काम तमाम कर दिया ना। क्या बोला है क्वेश्चन में, फाइंड वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल t0 टाउ। तो यहाँ पे तो टाइम ही नहीं है, कैसे निकालेंगे, देखते हैं कैसे निकालते हैं। dv को यहाँ पे x है, ओके, यहाँ पे वेलोसिटी है। अब हमें चाहिए क्या, चाहिए वेलोसिटी चाहिए। अब वेलोसिटी यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन में दिया हुआ है, और यहाँ पे हमें क्या पता है, हमें पता है a इज इक्वल टू dv dt होता है, इज इक्वल टू dv dt होता है। अब एक काम कर लेते हैं, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv dt को हम ऐसे लिख लेते हैं, dv dt dv dx लिख लेते हैं इंटू dx dt लिख लेते हैं। ओके, dx dt लिख लेते हैं। अब क्या होगा, ये dv dx यहाँ से निकल आएगा, dv dx यहाँ से dv dx निकालते हैं। रूट एक्स का डिफरेंशिएट क्या होता है, ये होता है, यहाँ से आया है ये। ओके, सो ये एक्सेलरेशन आया, यहाँ पे टाइम ले लिया, यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा b डिवाइडेड बाई 2 रूट एक्स, और यहाँ पे एक dx रह गया। अब इसका इंटीग्रेशन होगा। अब ये रहा हमारा t, ये रहा हमारा t। ओके, अब एक्सेलरेशन भी हमारा चाहिए। एक्सेलरेशन हम लिखेंगे, एक्सेलरेशन हम कहाँ से लिखेंगे, dv dt को निकालो यहाँ से अगर dv dt को निकाले, dv dt को निकाले तो क्या आएगा, dv dt को निकालने से सिंपल डिफरेंशिएट कर दो। एक काम कर लेते हैं, एक्सेलरेशन तो आ ही रहा है ना, यहाँ पे एक्सेलरेशन तो आ ही रहा है, इसको हम यहाँ पे वेलोसिटी से रिप्लेस कर लेते हैं। ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन यहाँ पे दे दो। वेलोसिटी का एक्सप्रेशन हम यहाँ पे दे देंगे b डिवाइडेड बाई √2x। ओके,
v डिवाइडेड बाई √2x और यहाँ पे वेलोसिटी जो है b इंटू √2x। सो √x कैंसिल हो गया। यहाँ पे जो एक्सेलरेशन आया है, एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा b²/2। तो यहाँ से हमारा एक्सेलरेशन मिल गया। ओके, और यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है वेलोसिटी निकालना पड़ेगा व्हेन t = टाउ। t = टाउ में वेलोसिटी निकालना पड़ेगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे हम एक्सेलरेशन निकाले हैं। ओके, ये क्वेश्चन में नहीं है, ये मैं एक्स्ट्रा करवाया है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे अगर वेलोसिटी को हम लिखेंगे, हम वेलोसिटी को, एक्सेलरेशन तो हमारा मिल गया। अब यहाँ पे dv dt करो, b²/2 करो और dv को रख लो यहाँ पे b²/2, यहाँ पे dt करो, इंटीग्रेशन करो, इसको इंटीग्रेशन करो। इंटीग्रेशन करने से क्या मिलेगा, यहाँ पे b आ जाएगा और यहाँ पे 0 to टाउ कर दो, टाउ को पुट कर दो, b² इंटू टाउ डिवाइडेड बाई 2। सो ये रहा वेलोसिटी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। देखो एक्सेलरेशन भी चाहिए हमें, हमारा यहाँ पे वेलोसिटी भी आ गया। बहुत ही अच्छा एक एप्लीकेशन, ये तुमको आना चाहिए, चेन रूल अप्लाई करना आना चाहिए, जो प्रीवियस प्रॉब्लम में हमने सीखा था। ओके, सो आज के लिए इतना तक। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे ग्राफिकल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू काइनेमेटिक्स एंड, और 2 वीडियो होगा, 2 वीडियो से हमारा काइनेमेटिक्स खत्म हो जाएगा। काइनेमेटिक्स 1 डायमेंशनल मोशन खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम 2 डायमेंशनल मोशन में आएंगे। एंड तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर एंड लाइक दिस वीडियो, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड जिन्होंने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकॉन प्रेस करना मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो जब भी आए तुमको मालूम पड़ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।